Hello everyone, welcome to our channel. Today we will be starting mathematics session of CTET and PSTET preparation. Through our videos, we will be discussing each and every topic, each and every concept and the tricks that are required to solve the mathematics problems in the CTET or PSTET paper. So starting from the syllabus discussion, like as in science session, the total paper will be of 30 marks. This is further divided into portions, means the 20 marks paper will be from the different units or chapters of the syllabus, and the 10 marks paper will be from the pedagogical issues. The issues related to the teaching of mathematics that will be discussed separately in the separate video. So regarding the syllabus, the units are number system. नंबर सिस्टम में आपका आएगा द टाइप्स ऑफ नंबर्स लाइक द होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, प्राइम नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल, इरेशनल, फ्रैक्शंस, डेसिमल, ऑल दीज थिंग्स. अलजेब्रा में आपका आएगा द डिफरेंट आइडेंटिटीज, द रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस टाइप ऑफ सम्स. द नेक्स्ट यूनिट इज ऑफ ज्योमेट्री. ज्योमेट्री में आपकी आएंगी 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल फिगर्स की नॉलेज होनी चाहिए. मेंसुरेशन, the areas, the volumes, the data handling. Data handling में आएगा the calculation of mean, median or mode, these kind of things, calculating the average. So about the pedagogical issues, I have already told you that the paper will be of 10 marks and 20 marks will be on the basis of these calculation type of sums or problems. So today we will be starting from the unit number system. Under the number system, we will topic wise daily discuss, in every video we will discuss about the tricks that are required to solve the sums related to the number system. So starting, the type of numbers. Now it is very important to have the knowledge of the type of numbers. This is very important topic because many of the sums in the paper are based on the knowledge of types of numbers. Sometimes you know the method of solving the sum and you know the formula or whatever, but where you lack is you don't know what are natural numbers, what are whole numbers, and then you don't आपको पता नहीं चलता कि कौन से नंबर्स लेने हैं और कौन से नंबर्स को चूज करके उस सम को सॉल्व करना है. इफ दे हैव सेड नेचुरल नंबर्स, इफ दे हैव आस्क्ड होल नंबर्स, तो आपको नॉलेज होनी चाहिए कि कौन से नेचुरल नंबर चूज करके हमने सम को सॉल्व करना है, होल नंबर्स कौन से हैं. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. आज हम सिर्फ टाइप्स ऑफ नंबर ही डिस्कस करेंगे. सो स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट टाइप, दैट इज नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर्स आर दोज दैट स्टार्ट फ्रॉम 1, मीन्स starting from 1 and so on, 1 2 3 4 and continuing next. And whole numbers start from 0, 0 1 2 3 4. It means natural number are included in the whole numbers because the whole numbers are starting from 0 and natural numbers are starting from 1. It means the natural numbers are included in the whole numbers or they are a subset of the whole numbers. Next is integers. So integer contain all the whole numbers and also the negative numbers. You must be familiar with the number line. That is the number line that contains the negative numbers and the positive numbers. So all these numbers means containing till infinity, all the negative numbers, 0, and the positive numbers, all these are considered under the set of integers. So next is the prime numbers. Prime numbers are those that have only 2 factors, 1 and itself. Prime numbers में वो numbers आते हैं जिनकी prime factorization करने पर सिर्फ और सिर्फ 1 आता है या सिर्फ वही number. Example is 2 3 5 7. Suppose we have 5. Now factorizing it, 5 ones are 5, that's it. Means जो किसी और के टेबल पे नहीं आते, जो सिर्फ अपने टेबल पे ही आते हैं. 5 ones are 5, 7 ones are 7. So they have only 2 factors, that is 5 and 1.
सो जिन नंबर्स के फैक्टर्स में सिर्फ 1 एंड इटसेल्फ मीन्स वही नंबर आता है उनको हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं. बट रिमेंबर दैट 1 इज नॉट अ प्राइम. This is very important to note. Sometimes it is asked in the questions. So 1 is not a prime. Prime numbers start from 2. Now opposite to prime numbers, next is composite numbers that I have written at the last. Composite numbers क्या होते हैं? जो prime नहीं होते वो composite होते हैं. All the non-prime numbers means prime numbers को छोड़ के जो बाकी नंबर बचे हैं, suppose we have 4. तो factorizing the 4, we have 2 2s are 4. So in the factors of 4 we have 2 and 2. So this is a composite number because prime numbers में सिर्फ या तो वही नंबर आता है factors में या 1 आता है, लेकिन composite number में कोई और जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो आ सकते हैं. सो जो नंबर्स नॉन प्राइम हैं उनको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स. रिमेंबर वन थिंग दैट 1 इज नीदर अ प्राइम नॉर कंपोजिट. 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट. सो नेक्स्ट इज रैशनल नंबर्स. रैशनल नंबर्स वो होते हैं जिनको हम p ओवर q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, दैट आर एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p ओवर q. p over q example 1/5, 2/3. Now if it is written 5, is 5 a rational number? Yes, obviously, because 5 can be written in the form of 5 over 1. हम 5 को ऐसे भी लिख सकते हैं because इसका मतलब तो सिर्फ 5 ही आएगा again. So जो नेचुरल नंबर्स या वैसे नॉर्मल नंबर्स हमारे हैं विदाउट फ्रैक्शन, उनको भी हम जो है रैशनल की फॉर्म में p ओवर q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं. इररेशनल नंबर कौन से हैं? दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p ओवर q. सपोज वी हैव square root 2, square root 3. Now if you have square root 16, this is not a irrational because we know the square root of 16 is 4. And what is 4? 4 is rational because it can be written in the form of 4 over 1. So irrational number वो हैं जिनका स्क्वायर रूट भी नहीं निकाल सकते हैं हम, और उनको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं. सो इररेशनल नंबर्स जो हैं वो आपके इस फॉर्म में भी हो सकते हैं. मींस जिनका जो डेसिमल है या कह सकते हैं आपकी जिनको डिवाइड करने पर जो क्वोशंट है दैट उसमें डिजिट्स रिपीट होते जा रहे हैं, मींस दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग, वो कहीं खत्म नहीं हो रहा, तो दैट आर नोन एज इररेशनल नंबर्स. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है नंबर सिस्टम, नंबर्स की नॉलेज होना, टाइप्स ऑफ नंबर्स की, क्योंकि इसी के बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व होने हैं. सो वंस यू हैव द नॉलेज ऑफ द नंबर्स, इन द नेक्स्ट वीडियो मैं आपके लिए बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस लेके आऊंगी जो प्रीवियस पेपर्स में आ भी चुके हैं और जो नेक्स्ट पेपर्स में भी आने के चांसेस होते हैं, दैट आर रिपीटेड मोस्ट ऑफ द टाइम्स, जो कि सिर्फ इन्हीं टाइप्स ऑफ नंबर्स के बेसिस पे ही होते हैं. सो प्लीज डू have a proper practice of the types of numbers. Then in the next video we will be discussing the questions based on this concept. Thank you very much.